Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got the following list of contents. So let's discuss. The first says about the Ekalavia model residential schools. Okay, so यहाँ पे teachers का shortage को cater करने के लिए, okay, we have seen that this Ekalavia model schools, though it is very much of successful today in some of the tribal areas, लेकिन यहाँ पे आज because of the less teacher and student ratio, we could see that some number of problems are getting faced by these model schools. तो अगर मैं बोलूं about the Ekalavia model schools, so we know that this Ekalavia model schools or known as this Ekalavia model residential schools, तो इसको हम लोग बोलते हैं EMRS. Okay, and this has been under the categorization of Ministry of Tribal Affairs. Okay, so this proposed EMRs schools aims to make quality education accessible to some of the tribal students who live in some of the remote as well as hinterland areas of the country. Okay, so if I see about this EMRS, it is a scheme for making model residential schools for the Indian tribals, that is the scheduled tribes. Okay, so to give impetus to some of the quality education. Okay, so now if I see about the coverage of the scheme, so according to the EMRS guidelines, at least one EMRS is to be set in each integrated tribal development agencies having 50% ST population in the area. And thereby we can see that because of such number of activities, the EMRS has got the comprehensive physical, mental and socially relevant developmental strategies enrolled for every tribal students, which directly seeks to empower the students to change their agents, beginning in their school, in their homes, in their village, and finally in their larger society. So the focus will be differentially on the educational support to be made available to those standards, supposedly 11 and 12, and those in standards from 6 to 10, so that their distinctive needs can be met at the supreme stage. So supporting the annual running expense in a manner that offers various number of reasonable remuneration makes the construction of these schools necessary in the country where we have got a higher percentage of tribal peoples. So today, if you see about the legal provisions associated with the scheduled tribes, तो क्या क्या लीगल प्रोविजंस है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेसिस पे? हम लोग जानते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी व्हिच वाज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस अराउंड 1955. उसके बाद मैं बोल सकता हूं अबाउट एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. इसके बाद प्रोविजन ऑफ द पंचायत, हम लोग जो पेसा एक्ट बोलते हैं, पीईएसए, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996. Also, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006. And also, there are various initiatives related to Scheduled Tribes. जैसे TriFed हो गया, Digital Transformation of Tribal Schools हो गया, Development of the Particularly Vulnerable Tribal Groups का हो गया, प्रधानमंत्री वन धन योजना, जनधन नहीं बोल रहा हूँ, वन धन, VAN, वन, that means forest, National Commission for Scheduled Tribes. तो ये सब क्या है? These are some of the areas where we are directly focusing much more towards the scheduled tribes. Okay, so today if I see that this PVTGs, हम लोग जिसको बोलते हैं particularly vulnerable tribal groups, they reside in some of the 18 states and at least one union territory of our country, and thereby we could directly see that this PVTGs, okay, includes various tribes. Supposedly, if I say about the irregular tribes of Kerala, okay, Konda Reddy tribes of the region between Telangana and Andhra Pradesh, they are some peoples who are included in these PVTGs. Okay, and these PVTGs directly act as a separate category by the recommendation of the Devar committee in 1973. तो ये committee भी हम लोग का बहुत important है. Okay, this committee suggested. So thereby we could see that अभी जो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, जो हम लोग अपलिफ्ट करना चाहते हैं, द क्वालिटी एजुकेशन एंड आल्सो द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब लिविंग इन दिस एरिया, तो वहां पे अभी टीचर्स का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है, बिकॉज वी हैव हार्डली 4000 टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड सो फार. तो इसके लिए वी कैन सी दैट दिस वेरी lacuna of teachers that is very found in this Ekalavia model school should be very much felt at the earliest. Because if you are directly making less number of teachers, then the quality education will also be provided, will not be provided to these areas, and यहाँ पे लोग वहीं का वहीं रह जाएंगे.
तो we cannot directly develop them, we cannot directly initiate some of the growth associated with them. तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स बताया गया है. नेक्स्ट पे आते हैं. फर्टिलाइजर सप्लाई टू इंडियन रशिया. ओके, सो इफ आई से अबाउट द फर्टिलाइजर सप्लाई, अगर मैं बेसिक्स पे चला जाऊं तो फर्टिलाइजर्स क्या है? These are the materials of natural or synthetic origin that is applied to the soil or plant tissues to supply plant nutrients. India is heavily dependent on imports for fertilizers because with some period हम लोग इतना fertilizers में ये करते हैं, डायरेक्टली खर्च करते हैं. Okay, and there are particularly two important forms of fertilizers, mainly the urea and the DAP, that is the diammonium phosphate. Okay, so if I see about the concentration of fertilizers that India consumes about 500 LMT of fertilizer per year. Okay, ये एक मैं basic amount बोल रहा हूँ. Okay, so 500 lakhs metric tons हम लोग क्या करते हैं? Directly हम लोग use करते हैं, we consume it. Okay, and the center's fertilizer subsidy is said to be around 62%. Okay, because today if I see about the fertilizers which are mainly in demand, okay, so this fertilizers would be on urea, would be on some of the non-urea fertilizers. Non-urea fertilizers मतलब कौन सा? DAP, that is the diammonium phosphate. फिर MOP, that is the muriate of phosphate. So all non-urea based fertilizers are regulated under this nutrient based subsidy scheme. And thereby we could see that the governmental regulation on these fertilizers are much, because today India is directly growing more number of crops as compared to the ancient times. So the Department of Fertilizers has made it mandatory for every peoples to directly register themselves who are directly going in for the production or for the usefulness of these fertilizers. Okay, तो इसके लिए हम लोग ने बहुत ज्यादा पॉलिसीज भी बनाए हैं. Okay, and thereby we could see that अभी यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है? Just because India, Russia directly went for the war with Ukraine, तो यहाँ पे हम लोग का भी SCO summit के दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एज वेल एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो उन लोग ने आपस में बातचीत किया. तो वहां पे बोला गया है कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है कि लाइक दिस एरा, टुडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. तो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया, ठीक है, रशिया को, ठीक है, कि टुडेज एरा इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर. तो इंडिया चाहता है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको खत्म कीजिए. ठीक है, रशिया ने जवाब में वही बोला, ऐसे सहमति दिया कि हाँ चलिए ठीक है. ओके, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है अभी. ओके, जरूरत, मैं अगर व्लादिमीर पुतिन को देखूं तो सी ही इज अ वेरी एग्रेसिव मैन, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ही इज एग्रेसिव इन दिस नेशन, बट अभी उनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, बिकॉज दिस कंट्रीज प्रेसिडेंट, दैट इज यूक्रेनियन कंट्रीज प्रेसिडेंट, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि देयर कैन नॉट बी एनी नंबर ऑफ पीस ट्रीटी विद रशिया. तो अभी रशिया भी फंस चुका है इस वार को चलते, एंड स्लोली रशिया इज लूजिंग द एरियाज दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशियन आर्मी. ठीक है, तो अभी इसी के साइडलाइंस में इसका बात हुआ है, क्योंकि इंडिया इज डायरेक्टली फेसिंग a lot many number of issues, a lot many number of pressures from the world forum, because India is directly supporting Russia in this respective cause. Okay, तो in such a scenario अभी हम लोग का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है, हम लोग का क्रूड ऑयल खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग का फर्टिलाइजर्स खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज वी आर वेरी मच रिलाइड ऑन द रेस्पेक्टिव इंपोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो therefore you can see that Russian president ने बोला कि fertilizer supply to India has increased over 8 times, just because India is hugely dependent on the fertilizers that we directly coming in from the outside world. तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. यूएस कोस्ट गार्ड जॉइंट एक्सरसाइज. तो यहाँ पे क्या है? यूएस कोस्ट गार्ड शिप. ओके, तो जो उन लोग का ये शिप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज नोन एज मिडगेट. ओके, सो मिडगेट और द यूएस कोस्ट गार्ड शिप डायरेक्टली अराइव्ड एट द चेन्नई पोर्ट दिस फ्राइडे. ओके, फॉर अ 4-day visit as a part of goodwill gesture and to further cooperation between Indian and the US Coast Guards. So हम लोग का Indian Coast Guards, which was established by the time of August 1978, okay, and it is the 4th largest Coast Guard in the world. Okay, and one of the primary duties of this ICG is prevention of smuggling through maritime routes, and it is also responsible for rescuing various aid to civil authority operations, where it collaborates with other countries to combat transnational maritime crime and enhance maritime safety. So in the times of disasters, these Indian Coast Guards have played an important role and acted as a fast responder. ओके, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं? बीएसएफ को बोलते हैं. तो उसी के तहत हम लोग बोल सकते हैं कि द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इवन इन दिस मैरीटाइम सेक्टर इज डायरेक्टली द आईसीजी, दैट इज द इंडियन कोस्ट गार्ड्स. ठीक है, तो अभी ये आया है, दैट इज द मिडगेट. ओके, दे विल डू सम ऑफ द एक्सरसाइजेस विद द इंडियन कोस्ट गार्ड्स. ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा?
we will directly go for various number of reciprocal show of professional interactions, okay, between both the coast guards. And the aim of the visit is to boot what? Interactions between coast guards, enhance interoperability, okay, in the fields of maritime search and rescue, anti-piracy operations, and various other maritime law enforcement tasks. तो उसके लिए ये शिप यहाँ पे आया है, एंड दिस इज डायरेक्टली गोइंग विद अ फ्रेंडली जेस्चर बिटवीन द यूएस इंडो रिलेशंस, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आया है, और ये लोग एक्सरसाइज करके फिर वापस चले जाएंगे। तो अभी चेन्नई पोर्ट में ये डॉक है, दैट इज द शिप मिडगेट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आई हैव टू फ्लाई विद ब्लेंडेड बायोडीजल, ठीक है। तो आई हैव क्या बोला है कि लाइक वी नो अबाउट दिस AN32। AN32 क्या है? AN32 is directly known as Antonov 32. Okay, so you can see this is directly a turboprop twin engine military transport aircraft. Okay, तो ये बेसिकली यूज करते हैं हम लोग का इंडियन एयरफोर्स यूज करता है, ठीक है, फिर एंगोला का एयरफोर्स यूज करता है, इवन श्रीलंकन एयरफोर्स डायरेक्टली यूज दिस, इवन द यूक्रेनियन एयरफोर्स इज डायरेक्टली यूजिंग दिस, दैट इज दिस AN32। सो इट्स अ रशियन मेड, मतलब यूएसएसआर मेड, ठीक है। तो दिस एंटोनोव AN26 और एंटोनोव AN32, इवन देयर आर वेरियस वेरिएंट्स, ओके, यहाँ पे 32 है, 32A है, 32B है, 32B100 है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ओके, सो दिस Antonov 32 or this AN32, they also have got various number of specifications which makes them very much of useful aircraft in today's world. तो यहाँ पे कितने क्रू जा सकते हैं? 4 क्रू जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी द लेंथ इज अराउंड 23.78 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे उनका हाइट है अराउंड 8.75 मीटर, ठीक है। देन इफ आई सी अबाउट द प्रोपेलर्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोपेलर्स है, तो ये प्रोपेलर्स कैसे है? 4 ब्लेडेड कंस्टेंट स्पीड प्रोपेलर्स है, ठीक है। और ये मैक्सिमम स्पीड किस में जा सकते हैं? मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस AN32 एयरक्राफ्ट इज अराउंड 530 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 530 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द रेंज इज अराउंड 2500 किलोमीटर। सो देयरफॉर दिस AN32, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग ब्लेंडेड डीजल को यूज करेंगे, दैट इज अ बायोजेट फ्यूल को, बायोजेट फ्यूल की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे, बिकॉज दिस फ्लीट इज सर्टिफाइड टू फ्लाई even for some of the blended aviation fuel containing up to 100% indigenous biojet fuel. और ये बायोजेट फ्यूल कहां से प्रोड्यूस करेंगे? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड वेस्ट कुकिंग। Okay, so in the indigenous biojet fuel was first produced by our agency, which is known as the CSIR IIP lab at Dehradun, okay, which tested or certified for its commercial use in various number of aircrafts. Okay, so this fuel is directly made from the plant source that is known as Jatropha plant. Okay, ये देख लेना। Okay, Jatropha कौन सा होता है? Jatropha oil से बना है, okay, which is directly sourced and processed in this respective lab. Okay, and this is directly a part of the Make in India campaign, as the Make in India mission of this biofuels would be produced from some of the 3 bond oils, जैसे मैंने बोला Jatropha. Okay, and इस ये डायरेक्टली किसको सहायक करेंगे? इतने इवन this tribal areas and farmers can substantially augment their respective income by selling of these jatropha plants, because these plants can only be found in some of the higher forest, okay, in some of the hinterland areas. तो यहाँ पे जितने भी tribals है, farmers है, who are basically their source of livelihood is agriculture, so they can directly go for selling of this jatropha plant, which is been used in some of the recent times for producing or producing a good number of biofuels, that is a biodiesel, ठीक है। तो यहाँ पे द बेसिक बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन आए बायोडीजल, ओके, सो एडवांस बायोफ्यूल सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? इथानॉल, ओके, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू ड्रॉप इन फायर। थर्ड जनरेशन में विल डायरेक्टली गो फॉर द बायोफ्यूल्स, बायो सीएनजी, तो वो हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट जनरेशन में है, दैट इज बाय यूजिंग बायोइथानॉल एंड बायोडीजल। अभी स्लोली एंड स्लोली विल गो टुवर्ड्स द सेकंड, दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ इथानॉल, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब बोला गया है अबाउट दिस ब्लेंडेड biodiesel. Okay, so यहाँ पे I have to fly AN32 on blended biodiesel for 200 hours. तो ये बहुत लंबा आवर्स होता है, ठीक है, 200 घंटा चलाने के लिए, ठीक है, 200 घंटा it will be in the space only, okay, it will be in the sky. So at such point of time it's a very good challenge, okay, and therefore the performance is very satisfactory, even the air vice marshal directly says so, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी के बाद बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते द बिग सेवन। तो यहाँ पे बोला गया है अबाउट द एनिमल्स, ओके, सो इफ आई सी अबाउट द एनिमल्स, तो इंडिया का एक प्रोजेक्ट है टू डायरेक्टली सेव और टू डायरेक्टली रीइंट्रोड्यूस द चीता इन आवर कंट्री, ओके। सो टुडे इंडिया recently decided to around conserve 11 species of endangered small wild cats with the help of US based establishment that is Global Environmental Facilities, उसको बोलते हैं हम लोग GEF,
And it is mentioned worthy here that 7 out of these 11 species are on the IUCN red list, जो यहाँ पे दिखा गया है. Okay, so therefore this IUCN red list and this species having the nature borne distribution in India, primarily including the fishing cat, okay, जो एशियन लेपर्ड कैट है, जो जंगल कैट है, एशियाटिक वाइल्ड कैट है. ठीक है, तो हम लोग अभी बिग 7 के बारे में बोल रहे हैं. टाइगर, लायन, जैगुअर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ओके, कोगर एंड लास्टली चीता. तो इन 7 को हम लोग mainly focus कर रहे हैं in this respective arena. Okay, today where we will be going with various number of conservation projects which will be launched in various number of tiger reserves initially. तो हम लोग फर्स्ट सोच रहे थे कि दुधवा में करेंगे. दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग कहाँ पे करेंगे? पक्के टाइगर रिजर्व. पक्के टाइगर रिजर्व हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में है. कहाँ पे है तुम लोग कमेंट में बताओ. पक्के टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो देन we will even go for some of the 2 wildlife sanctuaries. Okay, that is the eagle nest in Arunachal and also Ranthambore in Rajasthan, which will also be a part of this conservation project. तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि फर्स्ट हम लोग दुधवा में इंट्रोड्यूस करेंगे, सेकंड हम लोग पक्के में करेंगे, और उसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, क्योंकि वो दोनों कौन सा है? दोनों टाइगर रिजर्व है. तो उसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे. दैट इज इन ईगल नेस्ट इन अरुणाचल एंड रणथंबोर इन राजस्थान. Okay, so as to conserve this number of things. So therefore, even the United Nations Developmental Program, the Worldwide Fund for Nature, the Global Tiger Forum, and even the NTCA, that is the National Tiger Conservation Authority, are an integral part of this plan as partners. Okay, so they will directly go for various number of activities or various number of concerns associated of saving such number of tigers or such number of animals or the big cats which are primarily important for the environment. ठीक है, तो therefore यहाँ पे पैंथेरा, जेनस प्यूमा, जेनस एंथियस, तो यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है about the genus which can be very much found, okay, belonging to these wild cats, to belonging to these big cats. Okay, so therefore we could see that this particular big 7 are directly used. तो ये जो big 7 है इसको याद रखना. Okay, कभी पूछ सकता है कि what can be their respective elements where this 7 are present. तो 7 का नाम याद रखना: टाइगर, लायन, जैगुअर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, कोगर एंड चीता. ओके, चीता तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज चीता will be slowly and slowly it will be reintroduced in this country, bringing it from Africa, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीता is directly extinct in the wild. ओके, तो ये देख लेना बिग 7 की बात. लास्ट में आता है एडिटोरियल स्टॉक टेकिंग. तो व्हाट इज दिस? इट डायरेक्टली सेज अबाउट द low supplies in rice, wheat, sugar should not be a concern, and state must pursue with exports, push crops, and dietary diversification. तो यहाँ पे बोला गया है about that in this current scenario, okay, even our respective Union Commerce and Food Minister Piyush Goyal ji, ठीक है, he wants even the state governments to ensure that farmers increase sowing of rice and also under wheat. तो wheat के rice के साथ साथ wheat को भी sow कीजिए. Because today, if you see that the paddy acreage in an ongoing Khalif plantation season is around 16.1%. Okay, compared to that of the same period in 2021. Okay, and today, if you see that this union minister is also very worried that rice may directly go the way of wheat, whose shipments were abruptly banned on some period of time because of achieving some of the lesser fiscal. So a deeper worry though is the government wheat stocks, okay, were the lowest in 14 years for that date, and they have not been marginally going on at a rapid increase rate. तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग को स्टॉक्स देखना चाहिए. तो this stock should be very much full up. That only we can directly export. That only we can directly make it very much available to the people of this country. Because once, okay, because today if you see that once this crops like rice, like wheat, like sugar canes, okay, which are directly going in for more and more number of nutrients, because in addition to this we can see that the proteins fed items like the dal, the milks, the eggs, the meat, the micronutrients like the fruits and vegetables are also, we can see that they are also very important. तो यहाँ पे rice और wheat क्या कर रहे हैं? They are directly going in for calories, carbohydrates. So all these links are very much can be seen, क्योंकि यहाँ पे क्या है? We have to directly make the stocks very much available for our future generations. Because one, we are directly available, making it available for the future generations, that at some point of time we can directly think about the element to refill the stocks that is plentifully available in our country. क्योंकि हम लोग आज, if I tell about rice and wheat, तो हम लोग यहाँ पे self sufficient. We are very much self sufficient in rice and wheat because we are producing rice, we are producing wheat,
Okay, we have got suitable soil, we have got suitable climate. Okay, we have got suitable machinery to associate more number of rice. We have got various number of hybrid crops. We are going in for various number of R&D, supposedly the direct seeding of crops. तो ये सब भी जा रहे हैं हम लोग. So in such a scenario, we need to tackle the atmosphere of making the stocks available for even the country and even for the respective export. लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम लोग एक्सपोर्ट करते करते हम लोग अपने कंट्री में ही अपना स्टॉक्स खत्म कर दें. तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है कि द स्टॉक टेकिंग शुड बी वेरी मच ऑफ इन अ डाइवर्सिफाइड वे एंड इट शुड बी वेरी मच अकाउंटेबल टू द पीपल और टू द गवर्नमेंट whom it is directly managing the resources. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बोला गया है about the stock taking. Okay, so that's all for today. We have got the 5 number of MCQs. Okay, do attempt it and you will get the answers in the Telegram channel of us. One main question sheet here. Okay, so you can directly join our Telegram channel to the link given below. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.